Your Excellency, Mrs. Doris Leuthard, President of the Swiss Confederation, Prime Minister Narendra Modi ji, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony where two documents will be exchanged, followed by press statements by the Prime Minister of India and the Swiss President. I will announce the first agreement to be exchanged. This is an MOU on technical cooperation in railways. This will be exchanged on the Swiss side by His Excellency Dr. Andreas Baum, Ambassador of Switzerland to India, and on the Indian side by Shri Ashwani Lohani, Chairman, Railway Board. The second MOU is between Konkan Railway and ETH Zurich. This will be exchanged on the Swiss side by Professor Dr. Sarah Springman, Rector ETH Zurich, and on the Indian side by Shri Ashwani Lohani, Chairman, Railway Board. May I now request the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to make his press statement. Your Excellency, Madam President, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सभी साथी, मैडम प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। एक्सेलेंसी, भारत आपके लिए नया नहीं है। आप पहले भी कई बार भारत की यात्रा कर चुकी हैं, परंतु राष्ट्रपति के रूप में आपकी ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हम भारत की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। ये इंडो स्विस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड एस्टैब्लिशमेंट के 7 दशक पूरे होने का भी समय है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस यात्रा से आपको उसी गर्मजोशी और आतिथ्य का अनुभव होगा जो हमें 2016 में अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान मिला था। मुझे ये देखकर हार्दिक प्रसन्नता होती है कि दोनों ही पक्षों की इच्छा सभी स्तरों पर घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर व्यापक और सार्थक चर्चा की है। इस यात्रा से हमारे मजबूत द्विपक्षीय संबंध और आगे बढ़े हैं। भौगोलिक प्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे विषय भारत और स्विट्जरलैंड दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम MTCR में भारत के शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड के समर्थन हेतु स्विट्जरलैंड के बहुत बहुत आभारी हैं। हमने भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी चर्चा की। इस एग्रीमेंट के प्रावधानों पर पहले ही बातचीत प्रारंभ हो चुकी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दोनों ही पक्षों ने इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आज दुनिया के सामने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी चिंता का गहन विषय है। चाहे ब्लैक मनी हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हथियारों और ड्रग्स के संबंधित
मनी हो। इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ हमारा सहयोग जारी है। पिछले साल हमने टैक्स से जुड़ी जानकारी के ऑटोमेटिक एक्सचेंज के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड में आंतरिक प्रक्रिया पूरी होने पर इंफॉर्मेशन हमारे साथ ऑटोमेटिक बेसिस पर साझी की जाएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है और भारत स्विस निवेशकों का विशेष रूप से स्वागत करता है। इस संदर्भ में हम एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। भारत की वृद्धि और विकास में सहभागी बनने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनियों के पास अनेक अवसर हैं। आज दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी बातचीत के दौरान हमने ये महसूस किया कि उनमें परस्पर लाभ के लिए बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन को लगातार बढ़ाते रहने की पुरजोर इच्छा उसमें दिखाई दी। भारतीय पारंपरिक औषधियां, विशेषकर आयुर्वेद, हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मुझे खुशी है कि स्विट्जरलैंड ने आयुर्वेद को मान्यता दी है तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए उत्सुक है। वोकेशनल एजुकेशन और स्किल के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड भारत से लाभ उठाने के लिए स्किल सोनिक्स का ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके अंतर्गत 5000 से अधिक भारतीय नौजवान लाभ उठा चुके हैं। इस मॉडल का विस्तार करने की दिशा में हम और भी सहयोग करने के लिए इच्छुक हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना सभी देश कर रहे हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम पेरिस समझौते को लागू करने की जरूरत पर और इसके कार्यान्वयन के तौर तरीके विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं। भारत को अपनी बढ़ती हुई क्लीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की सदस्यता से मदद मिलेगी। इस संदर्भ में एनर्जी की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड के निरंतर समर्थन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल और 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को हासिल करने के हमारे प्रयास क्लीन एनर्जी और ग्रीन फ्यूचर के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपकी ये यात्रा हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए मैं मैडम प्रेसिडेंट को धन्यवाद देता हूं और आने वाले महीनों में आपके साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत में आपके सार्थक प्रवास की शुभकामना करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. May I now request the President of the Swiss Confederation, Her Excellency Doris Leuthard, to deliver her press statement. Excellency Prime Minister Modi, distinguished guest, first of all, let me also thank Prime Minister Modi for the invitation, for the hospitality, the warmly welcome. We have been very honored about the discussion and the invitation so far. Let me also take the opportunity to express my condolences to the families, victims of the floodings of the monsoon in Mumbai. We know what it means when nature
is more and more also harmful to people, and that's why we also discussed during our conversation on climate change, on all the effects with the negative impacts on society, and that's why India and Switzerland are very much engaged in all these discussions, how we can make operational the Paris Agreement, how we can replace fossil energy with renewable energy, and therefore I'm very happy that we are fully in line with our activities and with our ideas how the world should change in this respect. The Prime Minister already mentioned that my presidential visit here to India marks the Treaty of Friendship of 1948. So during this visit we will also launch the Swiss-Indian friendship activities under the motto Connecting Minds, Inspiring the Future. This shows we have a long-standing friendship, and therefore we also have a long view on India's development. And we came here with more than 30 representatives of the business society to show also acknowledgement of the development of the reforms and of the reforms which have been undertaken also with Prime Minister Modi. The growth rates you have bring up a lot of people out of poverty, create new jobs, and you, with all this development, you have also more and more a very important role on the global political agenda. And I think that's also important because we are not only a huge country, you have also with that an international voice and more a responsibility. And I'm sure Prime Minister Modi will take also this responsibility with the Indian spirit and with the Indian view. Switzerland is the 11th largest investor in India and the 7th largest recipient of Indian investment. We are a small country, but economically quite powerful. And this shows that India and Switzerland have not only friendship, but we have also values we share together and an open-minded approach when it comes to investments, to partnership. And we are very happy that last year the negotiations of a free trade agreement began again, and we hope that with the elements which are pending, we can solve them as soon as possible, because I think this will give also the trade balance on both sides a new push. It is also important that we again have in place an investment protection agreement. We discussed about that also here. We have negotiations underway because we think that this would also be an element for further cooperation, further investments here from Swiss companies to India. The programs and reforms launched by your government, Prime Minister, are a good basis for strengthening cooperation. Switzerland is a relevant, reliable partner with special know-how for initiatives such as Skill India, Digital India, Startup India, Clean India, or Smart Cities. As you know, Switzerland normally is on the top countries when it comes to innovation, and we have a tradition on vocational training. We invest a lot in education, in research, and therefore I think here we can also cope together in these challenges ahead of us. Therefore, I'm very happy that today we've seen a memorandum of understanding, a cooperation in the field of railway between ETH Zurich and university here. I think that's exactly what we as political responsible persons want, a lot of cooperation from the private sector with universities, and then that we can put it operational for young people. We signed the MOU today on railway because, well, the Prime Minister pointed correctly out the importance of infrastructure in general and of railway as a mode of mass transportation especially. And here
perhaps you remember last year Switzerland opened the longest railway tunnel of the world with a lot of innovation on the engineering side, and I think here also we can put our forces together and learn from each other, and also here bring the infrastructure of tomorrow to India. As the Prime Minister pointed out correctly, in the financial relations we had in the last year a good cooperation. Switzerland accepted the automatic exchange of information, adopted all international rules. We have probably today one of the strongest laws on money laundering. Would be happy if other countries would follow Switzerland. And therefore I'm pleased that we have now also the Indian approach, or the expansion of the automatic exchange of information in Parliament, and we hope that end of this year this will pass so that we can be operational by 2019, that the first exchanges can take place. This is important because Switzerland is and will be an important financial place, and we have all interest to be transparent, cooperative, and a good, reliable partner. But without financial services, we cannot have investments and a business community which is active. So I think also here we can work hand in hand. Let me conclude my remarks also with a reference to energy. We know climate change and greenhouse gas emissions have a strong coincidence. Prime Minister Modi has a long experience also and a personal engagement in this respect, and I just can underline and support his initiatives. The Paris Agreement is an agreement so far. Now we have to implement it on national basis. And it's not easy in a growing society with a huge demand of energy, that we have access to electricity for all, that we have costs for energy, for power, which can be paid by every family, and that we can install as much energy and power supply for the future in the years to come. Here, I also think our joint forces can help to install a smart grid system, off-grid systems for the huge India you have, and also be a good partner when it comes to renewable energies, especially solar, where we have also, not only on the research side, but also on the entrepreneurial side, good companies who could be your partners. Therefore, I'm very pleased that between India and Switzerland, we will have also in the future a variety of a lot of fields of engagement, because we are both democracies. We believe in the rules of law, we believe in transparency and cooperation, and that's the best thing to really help our population to have more and more better life, to improve their life, and Switzerland will stand at your side and be a reliable partner also in the future. And with this state visit, I'm sure we laid the ground for further bilateral strengthened cooperation. Many thanks. Thank you, Madam President. Ladies and gentlemen, this concludes our engagement. Thank you.